A Watcher of the Dead by Nadine Gordimer. It is a short story and it talks about the apartheid movement. So now before we begin into the video, I'll talk about author and era, how this era has influenced the work and what are the impacts on youth and adults. And we'll talk about what aspects of this short story reflects on the biography of the author, and that includes 3-4 points or elements. Then we'll talk about the characters, the major and the minor, and the crux of it, and later on the plot, the summary, and the critical analysis. So I have also included the quotation as well as the explanation for it, because there is nothing provided on Google and YouTube about this particular short story. And I have later on discussed the major themes as well, and how those themes are aligned with the quotations of this specific short story. And not forgetting the discussions later on after we are done with the summary and the critical analysis, and also the figurative devices that are very important, and it influence the whole short story. And even in the critical analysis, those elements like figurative devices are used to enhance the overall picture of the short story or any literary piece. And lastly, with the conclusion as well. So let's begin with the lecture. ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अ वॉचर ऑफ द डेड, और इसके ऑथर का जो नाम है वो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, नदीन गॉर्डर मूह। तो अब इस शॉर्ट स्टोरी में अपार्थाइड मूवमेंट की बात की गई है कि लाइक अ वॉचर ऑफ द डेड जो है एक शॉर्ट स्टोरी है दैट टेक्स प्लेस इन अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका। तो ये जो ऑथर है वो साउथ अफ्रीकन ऑथर है। अपार्थाइड मूवमेंट 1950s और 1960s में शुरू हुआ था, और इसका जो मेजर प्रोपोनेंट है, द मोस्ट prominent proponent of apartheid movement was नेल्सन मंडेला। और इस मूवमेंट में या इस पीरियड में ब्रूटल रेशियल सेग्रीगेशन था, जैसे कि एक इंसान को या कम्युनिटी या कास्ट या इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को कलर के बेस पे जज करना, स्किन कलर, यू आर वाइट एंड आई एम ब्राउन, एंड यही जो वेस्ट में होता आ रहा है कि every white Englishman has every right to survive and enjoy his life, लेकिन black या Asians are never given their due rights। तो apartheid movement में ये था कि like we should put an end to this racial discrimination या segregation। अगर एक इंसान ब्लैक है या वाइट है या वट एवर स्किन टोन ही और शी इज़ हैविंग, तो इस पे लाइक इंसान तो है ना, लाइक क्यों उसको लाइफ गुजारने का राइट नहीं है या अपनी मर्ज़ी से लाइफ नहीं गुजार सकता? व्हाई इज़ दैट सो? सो इस अपार्थाइड मूवमेंट में ये डिस्कस किया था कि हाउ पीपल आर ऑप्रेस्ड बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इधर जो है, वेयर द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड डिनाइड बेसिक राइट्स टू द ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन।
तो अफ्रीका में तो सारे मोस्टली मेजॉरिटी ब्लैक कम्युनिटी है। और क्योंकि ये जो वाइट इंग्लिशमैन है ये आ गए थे एंड दे वर इन माइनॉरिटी, इनने गवर्नमेंट फॉर्म की एंड देन कुछ ऐसे लॉज बनाए कि इनको इवन इनके ड्यू राइट्स या बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे टू इवन सरवाइव दैट टाइम। तो इवन वाइट मैन के लिए अलग से रूम बनाया जाता था कि वाइट मैन या दे आर सो प्रिविलेज्ड कि दे शुड बी हैविंग अ प्रॉपर रूम फॉर द वेटिंग एरिया। और जो ब्लैक थे तो उनको बाहर रोडों पे खड़ा करते थे। सो हाउ awful it is. The basic definition or the literal definition of apartheid movement is that it's a formal policy of segregation and political, social and economic discrimination against the non-white majority in the Republic of South Africa. तो ये extreme racial segregation है of apartheid that lasted from 1948 to 1994 and included such restrictions as where people of certain races, तो इधर डिफरेंट रेसेस के लोगों को बहुत restrictions थी। तो एपेथाइड में हमारे पास है कि किस तरह नॉन वाइट या ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स ने किस तरह की रियलिटीज़ को फेस किया है इन टर्म्स ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड ऑपरेशन बाय वाइट कम्युनिटी। एंड जो हमारे पास ऑथर हैं नदीन गॉर्डमू, तो वो एक साउथ अफ्रीकन ऑथर है नोन फॉर हर अनफ्लिचिंग पोर्ट्रियल ऑफ अपेटाइड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब इसने ये जो हमारे पास ऑथर हैं इनने इस शॉर्ट स्टोरी में अपेटाइड को डिस्कस किया गया है। और असल में अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे तो इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे और हर ऑथर की जो भी लाइफ में होता है बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो हम पढ़ते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है उनके जो वर्क्स हैं उनमें। तो जो कि ये साउथ अफ्रीकन ऑथर है हमारे पास, ये जो और इनका जो ये वर्क है अ वॉचर ऑफ द डेड, तो ये सर्टेनली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हर वर्क। और ये ऐसा नहीं है कि ये टोटली रियलिटी पे बेस्ड है, ये फिक्शनल स्टोरी है, बट स्टिल एवरी ऑथर्स like kind of biography reflects on their work, so we'll study it later. तो हमारे इस ऑथर ने कहा है कि किस तरह हर एक इंडिविजुअल और सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस तरह के अपेर्थाइड का, और किस तरह रेशियल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस या सेग्रीगेशंस हैं या ऑपरेशंस हैं। हमारे पास एक और नावल है, इट्स बाय टोनी मॉरिसन, द ब्लू आइज़। वो भी इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। इफ़ यू पीपल हैव टाइम इवन गो थ्रू इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुली रिटन। और जो एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑथर ने हर कैरेक्टर के, पेकोला इसमें जो है प्रोटैगनिस्ट थी, व्हाट शी गोज़ थ्रू, मतलब बहुत ही वेल रिटन है। यू पीपल शुड गो थ्रू इट। टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन यूथ एंड एडल्ट्स, सो यंग रीडर्स जो हैं वो थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी क्राइसिस है, प्रेजुडिस है या बाइसेस है, एंड सोशल जस्टिस है। तो वाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी यंग रीडर्स ये थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं। बट टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, तो ये एडल्ट्स जो है दे गेन इनसाइट इनटू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपेथाइड एंड इट्स ह्यूमन कॉस्ट। एडल्ट्स जो है वो थोड़े उनके माइंड ब्रॉड होते हैं, देयर मेंटल हराइजन इज़ ब्रॉड, सो दे गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपेथाइड कि किस तरह ये मूवमेंट शुरू हुई थी एंड व्हाट are the basic rights of human and how a human has costed life, or humans have costed their lives and everything. They have put their lives at stake for this apartheid movement because justice को prevail होना चाहिए. There is another movie I would recommend, The Green Book. बहुत एक अच्छी है, उसमें जो कंटेंट है, द मीनिंग दैट मूवी प्रोवाइड्स इज़ वंडरफुल। उस ग्रीन बुक में क्या होता है कि एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होता है एंड ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड बट ही इज़ नॉट गिवन हिज ड्यू राइट्स। So I would highly recommend you guys to watch it for your own knowledge
and for your own purpose of gaining information. तो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, एडल्ट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं, जैसे कि अपार्थाइड मूवमेंट या इवन ऑन गोइंग वेस्ट में जो अभी तक ब्लैक मेन को एक ड्यू राइट नहीं मिलता और दे हैव वायलेंस इन देयर लाइफ।